Okay, guys, let me give a brief revision. Okay, what all we have discussed as a part of our, like this is the second week we are running. So what all we have discussed? First of all, we have started doing the discussion on the demo. After the demo, we have covered what all topic we are going to cover as a part of our business analyst training. Then, then we started working on giving you the structure, how the project is going to initiate, what will be the team structure. Okay, this all we have discussed as a part of our till now we can say. So in the structure I have given example for Axis Bank mobile application, where Axis Bank want to get one mobile banking application that will help their client to do their financial transaction online. So for that they went to the Wipro, and Wipro assigned one team called development team. In the development team, you are having project manager, project manager, developer, tester, business analyst, data engineer. They are going to create your project. Okay. And in the project, they are also having the different responsibilities. The responsibility of project manager is to take the ownership of deliver the project end to end. Developer responsibility is to develop the product by using the coding and all. Business analyst responsibility is to do the requirement gathering, requirement illustration, requirement analysis, and finally requirement documentation. For requirement documentation, he is doing the tools called BRD, FRD, SRS. Once the development will be completed, the tester is going to do the testing, or the BA will do the testing. Once the testing is complete, we will ask client to do the testing. There are two type of testing, SIT and UAT. SIT will be done by the developer. Sorry, SIT will be done by the tester or the business analyst. UAT will be done by the client. Once we complete the SIT and UAT, we will move the production deployment. So this all we have discussed as of now. In this set of topics that I told you as a revision, do you have any question, Venkat? No, Ashwin. Subhas, Sorry, sir. do you have any question? हेलो जो मैंने अभी बोला जितना भी रिवीजन की बात की मैं मैंने, सर थोड़ा सा ऑटो की तरफ से मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी नहीं, बताइए सर। बट मैं वही पूछा था कि जो हमने अभी तक पढ़ा अभी तक जो पढ़ा उससे कोई कंफ्यूजन है यस सर, आपको? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर सर। ठीक है। नैन्सी, नो सर। जितना पढ़ा है उतना रिकॉल हो गया? हाँ सर। ठीक, हाँ, एक और क्वेश्चन। वेंकट, इज देयर नोट्स इन लाइन? वेंकट, इज देयर नोट्स इन लाइन? हाँ, हमने ना कल परसों का वीडियो वो क्लास तक नोट्स बनाया। कल का नहीं बनाया था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाया था, राइट? हाँ, इसलिए एक्चुअली जब हम आपको कल वो मैसेज किया ना उसी टाइम हम नोट्स बना रहा था। ओके, सॉरी वेंकट, I'll try to send on the same day possible नहीं हो पाता because 10:30 ना, after 10:30 I'll go for walk and all, तो वो हो नहीं पाता है। Okay, but it's fine, but उसके पहले का complete है, right वेंकट? हाँ, यस completed. Okay, Nancy, notes in line? Sir, I have taken the screenshots and I am revising through that only. Actually, मेरे पास अभी लैपटॉप तो नहीं है, तो what I'm doing is कि मैं इसी में स्क्रीनशॉट के थ्रू ही रिवाइज कर लेती हूँ। नहीं, वैसा और नहीं मैं भी चलेगा, नहीं वैसा नहीं चलेगा। द प्रॉब्लम है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा राइट हैंड इंजर्ड है, तो मैं उससे लिख So नहीं पा sorry, रही हूँ। so sorry Nancy, इसलिए मुझे मेरे माफ पास अभी और मुझे कोई आप माफ कीजिए Nancy, please sorry, I was not aware No, about this. sir, it's nothing like that. You were not aware of that, Correct, I so was that's not aware. fine. Yeah, I was not aware. हाँ It's fine. आप नोट्स नहीं बना सकते हो क्योंकि आपको एक्सीडेंट हुआ है। इट्स फाइन, ओके, अ, नो प्रॉब्लम। नहीं, बट I'll try. मैं नो बनाने का मत ट्राई करो, ट्राई करूंगी मत धीरे करो, धीरे ट्राई करके। मत करो, नॉट ट्राई। वी विल हैव द पीपल हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द नोट्स। वेंकट विल क्रिएट द नोट्स, सिद्धार्थ विल क्रिएट द नोट्स, दे विल शेयर द नोट्स विद यू। ठीक है, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, इट्स फाइन।
नाउ नैन्सी, क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। अभी तक जो पढ़ा यस है सर। वो याद है ना आपको? हाँ। ठीक, चलो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। सुभाष, नोट्स इन लाइन? Yes, sir. On my way. On Monday or after Diwali, I'll submit the documents यस or I'll share the documents. यस। Okay. Okay, so what is software development life cycle that we are going to learn today, guys? We are going to start our very first topic, that is software development life cycle. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो जिस लाइफ साइकिल से होके गुजरता है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। बस दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी whenever you want to create any kind of software, वो सिस्टम जिस लाइफ साइकिल से होके गुजरता है उसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। In life cycle, you are having some set of steps. Okay. Example, if I want to go to my office. Okay. Example, I am currently in Mumbai, and if I want Mumbai, example in Airoli. And if I'm having my office in Dadar, so what I will do? Let me take the example of ठीक है, this example only. So what I need to do, I need to catch the auto. I'll go to local. From the local, I will take the local train, and then I reached out to the other end all. And then again I'll take the auto, and then again I will reach to my office. This is the process. ये स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है मुझे ऑटो में बैठना है, दूसरा स्टेप है मुझे लोकल में बैठना है, तीसरा स्टेप है मुझे वापस ऑटो में बैठ के पहुंचना है अपने ऑफिस। तो जो टास्क मैं परफॉर्म करता हूँ तो ये हो जाएगी मेरे ऑफिस जाने की लाइफ साइकिल। इन द सिमिलर वे, वट एवर टास्क दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म टू मेक द सॉफ्टवेयर, आप एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो उसको आप बोलते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो आप? यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, फर्स्ट टास्क। सेकंड, यू विल डॉक्यूमेंट इट। थर्ड टास्क, यू विल क्रिएट इट, कोडिंग करोगे आप एज अ टीम, मतलब फिर टेस्टिंग करोगे उसकी। सो दीज आर द टास्क दैट आर इन्वॉल्विंग। सो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो जिस लाइफ साइकिल से होकर गुजरता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, दैट विल लर्न इन डिटेल। We'll try to also understand what are the different kinds of model that we can have to learn the software development life cycle. Now, let me ask one question from Venkat. Venkat, where are you living now? और कोलकाता। Kolkata. You are in Kolkata, right? What is your home place? विजयवाड़ा। Hyderabad, Vijayawada, right? यस सर। Vijayawada. What is the kilometer distance? अराउंड 1500 किलोमीटर। No. Currently, you are in Kolkata. Okay. You want to go. Are you going to home? यस यस। When you are going to home? अब पोंगल का टाइम में। पोंगल का टाइम। पोंगल कब है? जनवरी में। In January, you are having a Pongal, right? Now you Yes. tell me, you want to go from Kolkata to Vijayawada on the Pongal festival. Pongal festival. What are the different way you can choose to go to your home? This is your office location, and this is your home. First way, फ्लाइट। you can take the flight and you will reach out to your home. यस। Second, ट्रेन। train. You can take and you can go to your home. Third, नहीं, वो एक्चुअली विजयवाड़ा के लिए वो दो ही रास्ता है। चलिए मान के चलिए, you are also having your own car. In case it is not feasible, understood, but this is one of the way. यस यस करेक्ट। जा सकते हो इससे भी। You can also go by bike. One of the way road available है, आप जा सकते हो। इन सारे प्रोसेस से आप पहुंचोगे कहाँ? डेस्टिनेशन घर घर जाना है।
घर जाना. This is your destination. So your destination is same and you are taking different kind of route, right? Different type of modes you are using. We can say these are the different type of model as well. आप फ्लाइट मॉडल से जाना चाहोगे तो आप पहुंच जाओगे, ट्रेन मॉडल से जाना चाहोगे तब भी आप घर पहुंच जाओगे, कार मॉडल से जाना चाहोगे तब भी आप पहुंच जाओगे. इन द सिमिलर वे गाइस, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल. Waterfall model, V-shaped model, red model, incremental model, spiral model and the agile model. इन सारे मॉडल का यूज क्यों होता है? Why we are using this set of model? To create your software. इन सबका जो डेस्टिनेशन है is to create your software. And for creating the software, you can use the multiple model. You can use the waterfall model, V-shaped model, rag model, incremental, spiral, agile. You can choose any of the model, but your output, your destination, your purpose is to create the software only. So there are different type of model that can be used to create your software. These are called the software development life cycle model. There is a different. If you want to reach to Vijayawada from Kolkata, if you will take the flight, it will take 2 hours, Venkat. Yes, 2.5 hours. Experience will be different. You will directly reach out to airport, you will catch the flight, you will reach to destination. Less effort, but commercials are high. Right? Yes, correct. Second way, you are taking the train. It is a long way, but not a very comfortable way because how many hours of journey? 24 hours. 24 hours of journey. In the train, it is very difficult. Correct? To go by the train. Why? Because first of all, 24 hours is a very big time. And to get the ticket is another challenge. Okay. So, but the destination will be the same. In the similar way, in waterfall model also, your destination, your purpose will be the same, but the way will be different. Experience will be different. Results will be different. Feasibility will be different. Productivity will be different. If I talk about the productivity, if Venkat take only 2 hours, Venkat can take flight and he can go to Vijayawada in 2 hours and he can join the company. Correct? And he can work also, but he will go by the train. First of all, he will catch the train, he will exhaust in train, and then he will reach out, he will take the break again because he was already exhausted. So better to go by flight only because he is not traveling frequently. It is not that on every week he is traveling. So if I talk about the productivity as well, the flight mode is good option for Venkat. Correct, Venkat? Correct. So that's why every model is having their own benefit. Every model is having their own productivity. So we'll try to understand what are the difference between the models and which model we need to use. Subhas, Nancy, Venkat, understood till here different kind of model? Yes, Yes, sir. Yes. Chalo, let's try to understand the definition of. Nancy, please read this. Okay, sir. Software development cycle, SDLC, is a process used by the software industry to design, develop, and test high-quality softwares. The SDLC aims to produce a high-quality software that meets or exceeds customer expectations, reaches completion within times and cost estimates. First, SDLC is the acronym of a software development lifecycle. It is also called a software development process. SDLC is a framework defining tasks performed at each step in the software development process. ISO IEC 12207 is an international standard for software lifecycle processes. It aims to be the standard that defines all the tasks required for developing and maintaining software. Thank you so much, Nancy, for the help. Now,
Yes, और sir. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक तरीका है, इट इज अ प्रोसेस. Software development life cycle is a process used by the software industry. In software industry, we can have Wipro, Infosys, Cognizant, Capgemini, TCS. These are the software industry company to design, develop, and test high quality software. Means it is a process. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक तरीका है, इज अ प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. In our example, I want to create the Axis Bank software. And to design, develop, and test high quality software, the process that I'm going to use, that is called the software development life cycle. The aim of the Wipro in our Axis Bank software is to produce a very high quality software. How we are going to define it is high quality? It should meet the customer expectation. It is having the very good quality in whatever the requirement we have told, it is available, functionality is fine, applications is running very smoothly, it completes within the timeline as well. If we have given the commitment, you will complete this requirement in 12 months. So 16 requirement in 12 months we are going to complete. It should complete within the time and the cost estimation as well. Okay, so this is the main aim of SDLC. So what is SDLC? SDLC is the process for creating the software. And the aim of the SDLC is to create the software that should meet the customer expectation. It should have the high quality and it should complete within the given time. SDLC is the acronym of software development life cycle. It is also called the software development process. SDLC is the framework. बहुत important line है. Please give 100% focus here. यही main important line है इसकी. SDLC is the framework that define task perform at each step in the software development process. जो आपके set of tasks जो आपने define किए हैं, that you need to perform to develop the software. जो भी आपके task हैं, task 1, task 2, task 3, task 4, task 5, ये सारे टास्क को जो आप कंप्लीट करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो आपको टास्क नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आप ये 5 टास्क कंप्लीट कर दीजिए, योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विल बी रेडी. Now what are this set of tasks that we are going to learn in the next slide. So what is software development life cycle? It is a process. एक process है to develop a high quality software. The aim of the SDLC to create the software, to meet the software, to meet the expectation of the customer as well as it should complete the time. Now SDLC is actually a SDLC is a set of tasks. वो टास्क क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ SDLC, या आप इस पे बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टास्क that are involving in the software development life cycle. The first task is the planning, defining, designing, building, testing, and deployment. So there are multiple stages or the multiple tasks which are going to involve. Once you will finish the task from 1 to 6, your software will be ready. इसके लिए to the client और to the end user भी बोल सकते हैं. जो आप एक्टिविटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, that means your प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, आपका सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो गया है. और इस सॉफ्टवेयर का जो पूरा प्रोसेस होता है, सेट ऑफ टास्क या आपके स्टेजेस, इसको बोलते हो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लाइफ साइकिल से गुजरता है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं. वो लाइफ साइकिल क्या है? दिस इज द लाइफ साइकिल. नाउ we'll try to understand कि in each step or in each task what are the actual set of work, या हम क्या करते हैं हर एक step पे. चलिए सुभाष, read the planning.
Yes, sir. Read on. Sorry, hello, sir. Should I Ah, read? yeah, please read. Planning and requirement analysis. Analysis is the most important and fundamental stage in SDLC. It is performed by the senior members of the team with inputs from the customers, the sales department, market surveys, and domain experts in the industry. This information is then used to plan the basic project approach and to conduct product feasibility study in the economical, operational, and technical area. Thank you so much, Subhash. So guys, I'm So, telling you, this question is going to come in the interview. ये एक इंटरव्यू का सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है. The interview question will be, what is the software development life cycle and which methodology you have used? First question. Second question, what are the tasks that are going to involve as a part of software development life cycle? And what are the stages of software development life cycle? These two questions will become in the interview. I'm again repeating the question. The question will be, can you please explain what is SDLC? Second question will be, what are the steps, what are the tasks, what are the stages that are available in software development life cycle? So this question will come in the interview as well as I will ask in the mock as well. जब आपका mock होगा तो भी आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा. First step, very first step is our planning and requirement analysis. What will happen? Axis Bank want a application called Axis Bank mobile banking application, and it is approaching to Wipro. Okay. Now in the planning phase में क्या होगा? First of all, business analyst will go to the client. In our example, Nancy will go to the bank and she will ask, please tell me the set of requirements you are having. What she is doing? She is doing the requirement gathering. इसी को हम लोग बोला जाता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन. आप इसको या तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल दो या तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन बोल दो. The first step of the Nancy as a business analyst will go to the client and gather the requirement from the client. One, Nancy will gather the requirement from the client. He will do the proper analysis of that requirement and he will categorize the requirement into three categories. Whether this requirement is easy, this requirement is medium, or this requirement is complex. Based on the high level understanding of the requirement, we are giving the timeline to the client है. हम लोग क्लाइंट को टाइमलाइन देते हैं. कैसे टाइमलाइन देते हैं मैं आपको बता चुका हूं इन द प्रीवियस क्लास. करेक्ट? सुभाष वेंकट नैंसी. yes, sir. Yes, sir. Venkat, Yes, yes. right? So they will give the timeline of 12 months. And they will, in the similar step, they are also going to define how many resources are going to work. So we are telling 5 resources, 3 developer, 1 business analyst, and 1 testers. So 5 resources, 12 months, we can able to complete this requirement. So this is the very first step called the planning and requirement analysis. So requirement analysis is the most important and fundamental stage of SDLC. It is performed by the senior member of the team with input from the client. This information is then used to plan the basic project scope. Scope means you need to define कि क्या क्या है, कैसा कैसा है, and conduct the product feasibility, study the economical, operation and technical area. But in the practical way जो होता है वो ये है, BA will take the requirement from the client. He will do the requirement gathering, requirement analysis. Then he will categorize, or she will categorize the requirement into easy, medium, and complex. Based on the high level understanding of the requirement, ऊपर से उसको पता चला, उससे they will give the timeline to the client as well as the resource allocation. So this is your planning in the first
software development life cycle stage. Planning understood? Nancy Venkat Subhas, Yes, sir. Yes, yes. Sir, Yes, I sir. have one query. please ask. Uh, just ये पूछना चाह रही थी कि डेवलपमेंट का काम तो जो डेवलपर है, लाइक सॉफ्टवेयर बनाने का काम डेवलपर का है, तो हम ज्यादा से ज्यादा बीइंग अ बीए हम कितना उसको एनालाइज कर पाएंगे कि ये कितना डिफिकल्ट है और कितना इजी पड़ेगा, ये जो भी रिक्वायरमेंट है। जब आप इसको कैटेगराइज करते हो, ओके, हाँ then you are doing the requirement analysis and you are doing the categorization. Easy, medium, and complex. There are two aspects. One, functional. Second, technical. फंक्शनल में आपके पास पूरा रिक्वायरमेंट आई, आप इसको किसमें कैटेगराइज करना चाहती हो नैन्सी? एक्सेस के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे, ऐसा भी है? सर, मैं वही पूछना चाह रही हूँ सर कि ये फंक्शनल, डेवलपमेंट। जी जी, आप हाँ फंक्शनल आपको समझा कि सूर्य रिक्वायरमेंट है, लॉगिन पेज है, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, हाँ मतलब कि थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, ओके, चैटबॉट भी चाहिए उनको। देर ऑल्सो लुकिंग फॉर द फीचर जहाँ पे एक ही जगह सारे लोगों के, हर बैंक की डिटेल आ जाए, करेक्ट? तो हाँ ऐसा सर। फंक्शनल आपको क्या लगता हम्म। है? सर जैसे कि मैं हेल्प कुछ जो करता हूँ, डैश। मैं हेल्प करता हाँ। हूँ। इजी तो नहीं है, नहीं। मक्खन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझो स्क्रैच से बनाना है ना, कुछ नहीं है बैंक के पास। हम्म, डैशबोर्ड बनाना है, जैसे आप बोल रही थी। हाँ, आप बोलो, क्या बोल रहे थे डैशबोर्ड के बारे में? नहीं, जैसे कि अगर मैं ये देखूं, अगर मैं मेरी डेवलपमेंट टीम के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये डैशबोर्ड बनाना इजी हो जाएगा उनके लिए, वो जल्दी बना सकते हैं बिकॉज उनका वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। पर जैसे कुछ कुछ जो नई नई चीजें हम ऐड कर रहे हैं, तो वो जैसे कि फॉरेक्स कार्ड का हमने बोला, या मैंने एक जगह पूरा कंसोलिडेशन करने को बोला, तो वो तो मुझे एक डेवलपर ही बता पाएगा ना कि ये इस चीज को पर्टिकुलरली बनाने में मुझे इतना टाइम जाएगा, ये इजी नहीं है जो आप चल, लेके आए हो रिक्वायरमेंट। तो जी पहले मुझे कस्टमर को टाइम देने से पहले आई थिंक मुझे मेरे डेवलपर टीम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा ना ये। जी, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले नैन्सी आपको फंक्शनली देखना होगा कि आपको क्या फील है एज हम्म। द बिजनेस एनालिस्ट। जो मैं मुझे लगता है नैन्सी, दिस, अच्छा वेंकट, इफ आई आस्क यू टू कैटेगराइज दिस, इन विच कैटेगरी यू विल कैटेगराइज दिस? इजी, मीडियम, कॉम्प्लेक्स? कौन सा? सॉरी, नो, विच कैटेगरी विल यू गिव? इजी, मीडियम, कॉम्प्लेक्स? कौन सा? नहीं नहीं समझा, आप फिर से पूछना। Okay, you want to create Axis Bank mobile banking application हम्म। from the scratch. You are having 16 requirement in your plate. You want to categorize functionally. This will go to easy, medium, and complex. As a functional, how are you are going to categorize this? Easy है, medium है, complex है? आई थिंक मीडियम। Medium, right? हम्म। या फिर you can say, सुभाष आप क्या बोलोगे? Medium, sir. Medium. As a business analyst, Nancy, it can be medium या फिर complex. अगर मैं हूं बिजनेस एनालिस्ट, मैं उसको कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। ओके, अब ये तो मुझे लगता है, मैं कौन हूँ? फंक्शनल। बनाना किसको है? टेक्निकल को, राइट? अब हाँ सर। नाउ पीएम विल गो टू टेक लीड। टेक लीड, आप बताओ कैसा लगता है आपको?
टेक लीड बेसिस, दिस इज 100% कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है सर। अगर डीए बोलता भी है मीडियम है तो उसके हिसाब से मीडियम होगा, हम जब डेवलप करने जाएंगे तो बहुत मेहनत है सर इससे। इफ यू आस्क द कैटेगरी, इट इज कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मल्टीपल इंटीग्रेशन करने हैं, एपीआई कॉलिंग होगी, डैशबोर्ड बनाना है, बहुत काम है सर इसमें, राइट। नाउ एज अ पीएम ही नीड टू टेक वन डिसीजन। तो पीएम हमेशा वर्स्ट केस लेके चलता है, प्रोजेक्ट मैनेजर विल से ओके इट विल बी कैटेगराइज्ड एज कॉम्प्लेक्स ओनली। नाउ टाइम इज कमिंग फॉर डेवलपमेंट टाइमलाइन। डीए बोलेगा सर मैं सारे रिक्वायरमेंट को 3 महीने में दे दूंगा या 2 महीने लगाऊंगा, मैं सारे रिक्वायरमेंट क्लोज करके दे दूंगा। क्योंकि अगर आपको क्या करना है, नैन्सी डेवलप करना हो तो आप जाओगी, पूछ लो क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट कर दोगी, दिखा दोगी क्लाइंट को, साइन ऑफ ले आओगी, राइट। दिस इज योर Yes, वर्क sir. एज अ फंक्शनल। Yes, बट sir. टेक्निकल पर्सन को क्या करना होगा वो बताएगा। टेक्निकल विल से सर मुझे इसमें कम से कम 5 महीने लगेंगे डेवलप करने के लिए, बहुत मेहनत का काम है सर। तो उसके 5 आपके 3, आपका टेस्टिंग रिलीज होगी 8 महीने के बाद। योर Yes, क्वेश्चन sir. वाज सर एज अ बिजनेस एनालिस्ट हाउ कैन आई कैटेगराइज की रिक्वायरमेंट इज इजी मीडियम और कॉम्प्लेक्स। मुझे पता है सर कि टेक्निकल कितना एफर्ट लगने वाला है। द आंसर इज द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी डिफाइंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर विद द इनपुट फ्रॉम डीए एंड द टेक्निकल। Okay, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. कन्विंस हो आपने इनसे? Yes, sir. Yes, sir. वेंकट सुभाष फाइन? Yes, yes, sir. सुभाष फाइन? दिस इज Yes, sir. अवर Yes, sir. दिस Fine, इज sir. अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। Yes, sir. प्लानिंग समझा आप लोग को क्या हुआ? द नेक्स्ट स्टेप इज योर डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। वेंकट प्लीज रीड दिस। Planning and requirement analysis. Requirement analysis is the most important and fundamental stage in वेंकट, SDL. वेंकट क्या? खाना खा लिया? खाना अभी तक खाए नहीं खाए खाया। नहीं खाए? कहाँ है आप? क्लास में तो है नहीं आप, यू आर नॉट इन द क्लास। ओके, वॉइस जोर से नहीं है। हाँ, सॉरी अश्विनी, क्या पूछ रहा है? माय क्वेश्चन इज व्हाई यू आर नॉट इन क्लास टुडे? बिकॉज ये हमने पहले नैन्सी ने रीड कर लिया ना, आई एम आस्किंग यू टू रीड दिस। ओके, समझ गया। समझ गया सर? हम्म प्लीज रीड डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। Defining requirements. Once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document the product requirement and get the approved from the customer or the market analysts. This is done through an SRS, that is a software requirement specification document through consists of all the product requirements to be designed and developed during the project lifecycle. Thank you so much. Thank you so much, Venkat. So, in the requirement planning stage, what all we have done, we did the requirement gathering, we did the requirement elicitation, same is, and we did the requirement analysis as well. After analysis, we have decided the timeline of the project, complexity of the project, easy, medium, complex, or the resource. This all activity we have completed as a part of planning. Now, the second step of software development life cycle is defining the requirement. In defining the requirement, once the requirement analysis is done, the next step is to clearly define and document your requirement. Means, as a business analyst, we will do the requirement documentation. जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है उसको मैं आपको डॉक्यूमेंट कर दूंगा। हैव आई शोड यू द BRD, FRD, SRS? नैन्सी, वेंकट, सुभाष, कल दिखाया है क्या आपको? Yes, sir. आपने दिखाया था। पूरा सा वर्ड फाइल कुछ दिखाई थी, राइट? हाँ Yes, सर, sir. हाँ सर। वही तो he as a business analyst, our second step in the software development life cycle is to define the requirement. For defining the requirement, we will write the requirement in Word file or in a different way.
For requirement documentation, we are having three set of document: DRD, FRD and SRS. ये दोनों कई बार एक ही होते हैं. In DRD, we will document all the requirement. Whatever requirement we have taken from the client, we will simply document all the requirement. हम उसको लिख देंगे. कैसे लिखते हैं? What is the format? What are the content of BRD? What is BRD? Everything I'm going to cover in our BRD class. अभी के लिए आपको इतना समझना है कि you will document your requirement. 16 requirement will be document in the Word file. एक Word file में you will document the 16 requirement. And then you will document the same in the FRD. ये दो different requirement, different documentation होते हैं. This is not the equal. ये क्या डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है. एज अ बिजनेस एनालिस्ट, सेकेंड स्टेप ऑफ द SDLC will be requirement documentation, and this requirement documentation we are going to do with help of BRD, FRD or SRS. Once we will create the BRD, we will ask the user. Nancy will create the BRD and then Nancy will give this BRD to Venkat. Client. And Nancy will say to Venkat, Venkat, I did all the requirement documentation. Every requirement is available in the requirement documentation of BRD. Requesting you to please go through and let me know if it is correct or not. 16 requirement is available or not. Then Venkat will go through the BRD. He will check whether the all 60 requirements are available or not. Expectation that Venkat is having is documented in the BRD or not. If there is any difference Venkat found in the BRD, Venkat will reach out to business analyst to Nancy, stating that there is a change in the BRD. I'm looking for some change. In the first time, name of the BRD is Axis Bank Mobile Application version 1. In the version, there's some change. Then client is suggested from, the client is asking from Nancy. Nancy will say, okay, sir, I will do the changes. Because in the BRD stage, we can take the change because the requirement is not finalized yet. What Nancy will do? Nancy will change the document and she will again give the second version of the BRD to client, to Venkat. Now, Venkat will again go through and Venkat will now this time say yes. All requirements are complete. Now, Nancy will request Venkat to give the BRD sign off. BRD sign off means Nancy will say, sir, please lock the requirement. Lock the requirement means currently today we are on 14th of October or 15th October, I don't know. It's 15th October. So 15th October we are deciding we are having 16 requirement to develop. Just lock this. I'm saying you in 12 months I will deliver this requirement to you. This requirement should not change in between as well. नहीं तो नहीं कर पाऊंगी sir. Client will say yes, yes, yes. No change, no change. Then client will give the BRD sign off. Once you will get the BRD sign off from the client, our requirement will be locked and then our next step of development will be started. Or the designing approach will decide. Defining the requirement, understood? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Don't worry about the documentation part, BRD, FRD, SRS, that I will tell you in the BRD session. BRD ka session, I'll tell you what is all things are applicable. Okay. Now, the third step. Subhas, please read this. Third point, sir. Yes. Designing the product architecture. SRS is the reference for product architects to come out with the best architecture for the product to be developed.
Based on the requirements specified in a SRS, usually more than one design approach for the product architecture is proposed and documented in a DDS, design document specification. Thank you so much, Subhas. Now, यहाँ पे हमने क्या किया था? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पे हमने किया रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. Now we will give this requirement to our designer team. In the designer team, there our product architecture will be available. They will say, okay, I want to have, I will use this approach number A. Approach number A to deliver your requirement. In approach number A, they will say how the application will look like. Second, if I'm going to take this approach, how much time I'm going to take, how many resources I'm going to take. But mostly designing approach में they are going to design the architecture. Data flow क्या होगा, data कहाँ से क्या आएगा and all. So everything is going to decide by the designing team. As a business analyst, this is the technical जहाँ पे हमें involve नहीं होना पड़ता है. We will just say कि this is our requirement that should be part of the product output and that should meet the customer expectation. So in the designing team, they will decide the different, they will create the different approach and they will decide one approach. तो एक approach को उठाएंगे and in that approach, they are going to create the DDS. कई बार DDS नहीं बनता है, they are just decide the designing approach and then the technical lead will take the ownership of this and it will approve. कौन approve करेगा? Technical lead का boss. Delivery head हो सकता है. The technical lead can also take the call. Yeah, this design approach I'm going to use. So in design approach, you are going to decide which approach, which architecture you are going to use for develop this application. It is more technical thing. एज अ बीए हमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है यहाँ पे, बट आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे आपका डिजाइनिंग अप्रोच डिसाइड होता है कि किस डिजाइनिंग अप्रोच से आप अपना रिक्वायरमेंट को डेवलप करना चाहते हैं. Nancy, Venkat, Subhas, understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Once your designing is completed, approach is decided. Here, this approach we are going to use to develop my software. Now the next step where developer are coming into picture and they are going to do the actual development. Nancy, please read this. Building or development the Okay, sir. Building or developing the product. In this stage of SDLC, the actual development starts and the product is built. The programming code is generated as per DDS during the stage. If the design is performed in a detailed and organized manner, code generation can be accomplished without much hassle. Thank you so much, Nancy. So in this step, actual development is going to start. The actual development means your developers will come and they start creating the development. They can use the multiple language to develop your software. They can use the different programming code to make your product, but it is not your piece of cake. You just need to have understanding. Yes, my development has been started. So this is the step where you need to say, yes, my development is start. So in the fourth step, we are having building and development of the product. So in building and development of the product, you are going to have development. Development understood, Nancy, Venkat and Subhas? Yes, sir. Yes, sir. Someone- Venkat, you want to add something there? No. No. Okay. Now, after development, once the development is completed, you are going to do the testing. So this stage is usually the subset of all the step where testing is going to perform. How many type of testing are there? Subhas. Sir, SIT and UAT, sir. So in the testing of the product, you are going to do two activity. One is your SIT, another is your UAT. What activity is going to perform in SIT? SIT, sir, system integrated testing, like it's internal testing. एक That test मिनट, cases will be wait. Internal testing, okay. and so test cases
will be like designed by the tester or the business analyst, Test cases will be written by the designer or the or the by the tester or tester by or the, the BA. yes sir. Okay. And ठीक है. UAT. sir, that's the user acceptance testing. That's the client side testing, sir. These are two types of testing. Okay, here it is the client testing. Yes, sir. The UAT, sir, client side testing. Yeah, UAT is the client side testing. Yes, sir. Here the test cases will be written by the client. The client, huh? Yes, sir. Okay. So in the testing of the product, you are going to do the actual testing. Yes, sir. Nancy, in the testing, what are the two major line items that internal team and external team are checking? The two major लाइन आइटम्स या दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट करते हैं वो टेस्टिंग में? सर एक तो जो रिक्वायरमेंट्स दिया था वो सारा किया गया है या नहीं, और दूसरा वो रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं. Very good, Nancy. Very good. So the first is whether my all requirements are available or not. Second, whether my all requirements are working as per the expectations or not. This is called the testing activity. Testing activity, there are two types of testing, SIT and the UAT. SIT will be performed by the internal team. Who will do the testing? Business analyst or the tester. UAT will be performed by the client. Client will do the UAT. In both the activity, they are going to check the two major things. First, whether all requirements are available as per the business requirement document. जो BRD में लिखा हुआ था, जो BRD में रिक्वायरमेंट 16 रिक्वायरमेंट लिखे थे, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट आर अवेलेबल इन माय एप्लीकेशन और नॉट. Second, whether all the requirements are working as per the expectations of that. So this is called testing. Nancy, Venkat, Subhas, understood testing? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next is your deployment and the maintenance. Subhas, read this. Yes, sir. Deployment, the product may be released as it is or with suggested enhancement in the targeting market segment. After the product is released in the market, its maintenance is done for the existing customer base. Okay, thank you so much, Subhas. So once we will complete the testing, it will be go live. आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाइव चला जाता है. This live activity is called the Deployment. deployment. Very good, Subhas. So deployment में क्या होता है आपका? Go live. Your project will go live. Okay? आपका प्रोडक्ट go live हो जाता है for the end user. The prod phase. But yesterday you mentioned that prod. Yes, I mentioned the multiple phases. So the multiple environment. One environment was SIT, one environment was UAT, another environment was your production environment. Yes, sir. और prod environment. तो ये जो deployment जो होगा UAT के बाद प्रोडक्शन में लाइव चला जाएगा. लाइव मतलब ये आपके एंड यूजर के लिए आपका एप्लीकेशन तैयार है यूज करने के लिए. Then we are having the maintenance. What is maintenance? In the maintenance part, as per the company policy and as per the general practice as well, we are going to keep eye on our product for 15 days. Nancy, we are part of which team? BA. Sorry, Nobody will give the answer. we are the part of the जो मतलब एप्लीकेशन पूरा डेवलप कर रही है, या कह सकते हैं पूरा प्रोजेक्ट का इनिशिएशन से लेकर उसको डिप्लॉयमेंट तक का जो भी काम है वो हम लोग कर रहे हैं. तो वी आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. मैंने बताया था हम लोग किस टीम का पार्ट है. स्क्रीनशॉट में देखिए. वेट वेंकट नो.
Nancy, go to your screenshot. Yes, sir. If you know, then you say yes sir, मुझे पता चल गया, और आंसर आप दोगे नहीं, आप बोल हाँ सर Okay, मुझे just मिल गया ना। नहीं नहीं नहीं, मैं स्क्रीनशॉट चेक कर रही हूँ सर। हम्म, सर मिल तो गया है क्योंकि आधे ठीक है, स्क्रीनशॉट हैं, आधे ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं है। मिल गया ना आपको, टीम का नाम मिल यस। गया, किस टीम के आप हिस्सा हो। यस सर। ठीक है, वेंकट, Yes, yes, Ashwin. वी आर पार्ट ऑफ विच टीम। Development team. नैन्सी, यस सर, डेवलपमेंट टीम। वी आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम इन द इम्प्लीमेंटेशन टीम। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना नैन्सी आज के बाद, ओके। यस सर। चलिए, तो वी आर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम, बट नैन्सी वन पॉइंट वाज वेरी गुड फ्रॉम योर साइड। आपने बोला सर हम ऐसी टीम का हिस्सा हैं जो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की जिम्मेदारी उठाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ द टीम हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम एंड टू एंड, और वी कैन से फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, राइट नैन्सी। यस सर। You are absolutely right. And Venkat, your answer is also right. We are calling as a part of our development team. We are development team. So as a development team, we will take responsibility of the product जो हम डिप्लॉय कर दिया है, लाइव कर दिया है 15 दिनों तक, 20 दिन तक ज्यादा से ज्यादा। तो 20 दिन तक अगर कुछ इश्यूज आते हैं लाइव जाने के बाद, तो वी विल सपोर्ट, एज अ सपोर्ट हम सपोर्ट का काम करते हैं। बट आफ्टर 20 days और आफ्टर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कंपनी के साथ होता है, अगर 2 महीने बाद, 2 मंथ्स के बाद कुछ इश्यू आता है, तो वो जाता है वेंकट की टीम में, और वेंकट की टीम का नाम है प्रोडक्शन, सॉरी वेंकट में असली में वेंकट इस टीम में काम करता है, नॉट एज अ क्लाइंट, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम। एक टीम होती है गाइस, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम, जो कि प्रोडक्शन में जितने भी इश्यूज आते हैं उसको हैंडल करती है। बट ये रैंडमली हैंडल नहीं करेगी, किसी को अगर कुछ इश्यूज आए हैं तो वो अपना टिकट रेज करते हैं, दे विल रेज द टिकट, एंड देन उन टिकट पे प्रोडक्शन सपोर्ट टीम काम करती है। So as a part of maintenance, we will keep eye on our deployment for 15 to 20 days. After a few months, if any issue is coming, this issue will be taken by the production support team, and production support team always work on the ticket. अश्विनी, ये प्रोडक्शन टीम कौन सा, क्या आईटी कंपनी के रहते Production हैं क्या, support team, क्लाइंट? production support team. No, no, IT. ओके। Job Wipro only. हम्म। So Wipro is having different kinds of team. One is the development team. Second is support team. Okay, ओके, यस। Nancy, understood? यस सर, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि सर जैसे कि एप्लीकेशन पूरा बन गया है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली, बट आफ्टर सम टाइम द क्लाइंट वांट्स सम मोर अपडेट्स इन दैट सेम एप्लीकेशन, तो वो प्रोडक्शन सपोर्ट टीम के पास नहीं जाएगा ना, या वो आपके हिसाब वही से लोग? किसके पास जाना चाहिए? आई थिंक वो वापस से डेवलपमेंट टीम के पास आना चाहिए। क्यों नहीं जाएगा पुराने सपोर्ट के पास? प्रोडक्शन एंड सपोर्ट में तो सर जैसे जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, उसमें अगर कहीं एरर आता है या किसी तरह से वो पर्टिकुलर साइट काम नहीं कर रही है, देन आई थिंक वो प्रोडक्शन सपोर्ट टीम हेल्प करती है वहां से उसको करेक्ट करने में। बट अगर कोई डेवलपमेंट मतलब कोई अपडेट लाना है एप्लीकेशन में, तो फिर वो अपडेशन के लिए तो डेवलपर के पास ही जाएगा ना, सपोज कोई नया ही अपडेट उसमें डालना हो तो। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव वन 7 करोड़ रुपीज। आप जीतते हैं 7 करोड़ का इनाम। बहुत सही सर बात मैं बोली आपने। देयर इज नो कंफ्यूजन एनीथिंग, योर आंसर वाज क्रिस्टल क्लियर।
The question of Nancy was, sir, if any new change is coming, example, we are having 16 requirement. हमने उसको 12 महीने में डिप्लॉय कर दिया. क्लाइंट 4 महीने बाद आता है और बोलता है हमको 5 न्यू रिक्वायरमेंट डेवलप करनी है. ये कौन सी टीम करेगी सर? विच टीम विल डू दिस? Nancy said, sir, as this is a new requirement, this will be taken by the development team. Why development team? Because we are the people who do the development. हम बनाना जानते हैं. That's why the required will come to the development team. Why it will not go to the support team? Because as per the Nancy answer, support team will do work on the issues, bugs. They will not do the development. So she is right. Okay, Nancy? Okay. एंड क्लाइंट फिर से ये सारा अग्रीमेंट फिर से फिर से प्रोसीड करना पड़ फिर से प्रोसीड करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा वापस. न्यू अपडेट, न्यू चेंज, प्लानिंग करेगा, डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट. Yes, Venkat. What the requirement is coming with the new change, it need to follow the entire SDLC life cycle. अगर अश्विनी अगर इन बिटवीन अगर प्रोडक्ट डेवलप होने के बीच में अगर क्लाइंट मांगते हैं चेंज रिक्वेस्ट 16 का जगह अगर 17 ऐड करता है तब उसको क्या आईटी कंपनी का डिने कर सकते हैं क्या कैसे? It is a very important question from the interview perspective. The question is, sir, I was working in the requirement. My project is 12-month project. I'm having 16 requirement. Now, in the 5th month, I have received the 17 requirement, one new requirement to the client. As a development team, what will be our approach? As a business analyst, what will be my responsibility? Can we say no? Can we say yes? What we need to do? I am going to give answer this question in the next class. Because this will come under the change management life cycle. Understood, Venkat? यस समझ गया बट एंड एक और अगर क्लाइंट बोलता है प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा एंड टाइम इज फिक्स्ड टाइम एंड अमाउंट इज फिक्स्ड बट आईटी कंपनी को रिक्वेस्ट करता है चेंज रिक्वेस्ट जरूर करना ही पड़ेगा उस केस में हम लोग एज ए बीए हाउ टू वी हैव टू हैंडल दैट इशू. You are telling one concept called scope creep. In the scope creep, the requirement is enhanced or the scope of work is increased from 17 to 16, 16 to 17. But client do not want to do the change in the timeline, change in the project resources, as well as do not want to change the price. As a business analyst, how I'm going to take this? Correct? yes This correct. is the topic called scope creep. That also we will discuss. So Okay. two topics you have asked me today. One is the change management topic, another is the scope creep topic. Scope creep, we are going to learn after our waterfall methodology, and change management, I'm going to tell you in the waterfall methodology when we are going to learn this. Okay? Okay. It is very important, very important question. Both questions are very important question. And this will come in the interview by damn sure it will come in the interview. And this question will also come in NC ने पूछा नया चेंज आएगा तो who will do? Because अगर आप BA ऐसा काम नहीं किए तो आप नहीं बता पाओगे इसको. ठीक है, चलिए. Any question you are having, guys? Nancy, Venkat and Subhash? No, sir. No. Okay. Thank you so No, much all. Acha, one more point. Nancy cannot write. Subhash, yes, sir. if I am telling you guys, I will Yes, sir. explain you this topic in the next lecture. I will Yes, sir. explain you this particular concept in upcoming slides. Yes, You sir. note down. Yes, sir. Yes, sir. You note down. This is your responsibility. Yes, And अगर मैं उसको 3-4 लेक्चर हो गए मैं नहीं बताता हूँ क्लास खत्म Yes. हो गई 2 महीने हो गए नहीं बताए तो आपको Sure. बताना है.
Sure, sir. बट इतना लेट नहीं करना है आपको, 2-3 हफ्ते मेरे को टोक ही देना है, तो ये नहीं हुआ है। Yes, sir. Like whatever queries that we have raised and you have said कि हम लोग उसको next discuss करेंगे, so we have हाँ, to remind उसको you. जैसे अभी चेंज मैनेजमेंट और स्कोप क्रीप, ये 2 टॉपिक। Yes, yes, yes. Noted, sir. Okay. Thank you so much all for joining Thank the you. session. Have a great night ahead. Good night. Bye bye. Thank you, sir. Thank Good you. night, sir. Bye. Bye.